Namaskar and a very good morning. Welcome to the audio cast from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Bannerjee. Geopolitical risk कभी भी financial markets के लिए बड़ा खतरा नहीं बना है. But till they have been in the headlines, it created a lot of volatility, and that's exactly what is happening with Ukraine and Russian situation. कल तक the headlines coming from the American news wires was that Russia is going to invade any moment. They have been saying that ad infinitum. Without any credibility. But at least in the morning, an official news surfaced that there's going to be a trilateral talk. French president, US president or Russian president के बीच. और जिसके कारण we saw or rather we are seeing a rally in the equity futures, a rise in the Asian currencies, a very small sell-off in the crude oil, and that is all good news for the Indian rupee. So dollar rupee offshore में it's trading near 74, 55, 56 on the spot, जिसका मतलब Feb futures जो 24th को expire होगा, it's may open around 74.58, 10-12 paisa lower from last Friday's close. Bias continues to be downward क्योंकि even when the environment was challenging, rupee was appreciating. That was last week. तो अभी अगर positive environment होगा ये हफ्ता, तो फिर Indian rupee can appreciate much faster. Last week, Indian rupee was one of the best, or rather one of the strongest currencies in the emerging market basket. तो ये हफ्ता that tendency will remain, or that momentum will remain. But one thing we have to keep watch for is RBI intervention. क्योंकि जो हम लोगों ने देखा है in the past कि closer to 74, RBI gets very active. और जब भी Indian rupee starts to outperform its peers on a consistent basis, RBI steps in. So that is one risk we have to be aware of, closer to 74. अभी फिलहाल 74.50 के आसपास है, तो हो सकता है another 30-40 पैसा down. But closer to 74, that risk is we have to be aware of. Accordingly, we have to adjust our positioning. So what will be the fresh trade? But before we come to the fresh trade, now let me give you a more explicit view of the important levels. 74, 40, 45 is an important support. और उसके बाद आएगा closer to 74. 74, 40, 50 और 74 के बीच 74 is a bigger support. But generally क्या होता है कि 74 50 में large open interest है in the put options, तो हो सकता है एक बार interim के लिए उसको support वहाँ पे मिल जाए. तो but the bigger support is near 74 और resistance अभी 75 के आसपास है. Not just on charts, even अगर हम लोग open interest देखें call options में OTM में out of money, तो 75 कॉल ऑप्शंस में हेवी राइटिंग हो रहा है और आज भी शायद वी माइट गेट टू सी मोर एडिशंस. तो 75 इज गोइंग टू बी मेजर रेजिस्टेंस और जब तक 75 के नीचे है तब तक द बायस इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड फॉर द मोमेंट. तो हाउ टू नाउ प्ले दिस मार्केट? आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेश पोजिशंस. वी हैव बीन शॉर्ट इन दिस डिक्लाइन ऑल थ्रू. फ्रेश पोजिशंस में फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी पुट स्प्रेड एंड सेलिंग आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस. पुट स्प्रेड इसके लिए क्योंकि गैप डाउन में स्टार्ट होगा, तो सेलिंग फ्यूचर्स इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इज मोस्ट ऑफ द केसेस दीज गैप्स डोंट सस्टेन, स्पेशली आफ्टर अ डिसेंट डिक्लाइन. तो इसके लिए देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट ड्यूरिंग द डे दिस गैप माइट गेट फिल्ड. इसके लिए शॉर्टिंग फ्यूचर्स एट द ओपन इज नॉट एडवाइजेबल. It's better to do put spreads. So even if there is a pullback, a technical pullback, your spread is going to protect you. दूसरा, why selling call options? एक तो these pullbacks can be easily handled with selling out of money call option. और दूसरा, अभी भी implied volatility और VIX elevated है. तो selling an option out of money is not a bad idea. And especially जो calls में जो VIX है वो हायर है देन द एट द मनी. सो जो हम लोग बोलते हैं स्क्यू, तो इट कैन बी डन. अगर फ्यूचर्स सेल करना है, इट इज़ एडवाइजेबल टू वेट फॉर अ पुल बैक. पॉसिबली द बेस्ट प्लेस टू शॉर्ट फ्यूचर्स विल बी बिटवीन 74, 75 एंड 80, क्योंकि स्टॉप लॉस रहेगा 75 के ऊपर ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस.
Across currency में GBP is strong, GBP dollar, but GBP dollar का positivity to spill over into GBP INR will take time because dollar rupee is on a downhill path. तो जैसे ही USD INR becomes stable, GBP INR can be a good long side bet. So that's it, folks. This is Anindya Bannerjee signing off. A fantastic day ahead.